ये हमारी बेसिकली पहला सेशन है सेमिनार वेबिनार का। इससे पहले हमने बेसिकली स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को। उसके बाद हमने बेसिकली कोलैबोरेशन की है एनईडी के ग्रेजुएट्स के लिए फॉर हायर एजुकेशन, जिसमें लम्स यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में प्रोवाइड की हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास A&M में हमने स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई हैं। So whoever is an NEDian and he applies for a master's or PhD in these universities, and an MBA from LUMS, there are scholarships available for them, him or her, based upon the admission criteria by the particular university or school. तो हमारा काम फैसिलिटेट करना है। इट्स नॉट अ कोटा सिस्टम, इट वुड बी यूज्ड, दिस विल बी basically for students of NED, going for schools and going for masters and PhD program. इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम हमारी तरफ से एक रिसर्च इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी है, जिसके अंदर वी आर आस्किंग फॉर एनईडियंस टू पुट इनटू all sorts of projects which they can, and we can basically fund those projects. इस सिलसिले में हमने अभी एक रिसर्च पेपर पब्लिश, बेसिकली पार्टिसिपेशन हुई है सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के एक कॉन्फ्रेंस थी दुबई में, जिसमें हमारी एनईडियंस मुंतहा अंजुम पार्टिसिपेटेड और हमने उसको फैसिलिटेट किया। So these are the activities which we are doing, and we would appreciate that you guys just keep looking this HoustonNEDA.us, this website. We update whatever activities are coming and whatever we have for NEDians. So our main focus and objective is to help NEDians and to help our our alma mater to basically excel and have a better ranking. So it's a cyclic process, and we expect that once you guys graduate, you'll be doing the same. Okay, thank you. So this is my topic. This is a 5G overview. We have spoken a lot about basically technology. We have spoken about security. We have spoken about digital twins. We have spoken about artificial intelligence, machine learning. तो अब बेसिकली ये सारी चीजें बेसिकली ख्वाब हैं, तो उसकी ताबीर क्या है, मतलब होगा कैसे? So that's what we are discussing right now. So we have discussed about certain concepts, some certain level of digitization, but ये digitization होगी कैसे? How this will be coming into play? So for that we need basically an infrastructure. So that infrastructure needs to be created, and that infrastructure is 5G. तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे. So I'll start my discussion with brief introduction. Actually, people are still joining in. So people already know me. My name is Nasir Hussain. I'm basically working in the telecom industry for almost 20 years. I've worked in multiple countries. I've worked on multiple technologies. Right now, my focus is on 5G and moving towards 6G as well. तो बेसिकली मेरा टारगेट आज आपको 5G के एक फ्लेवर देना है, ताकि वो आपका फ्लेवर से आपको आइडिया हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड हाउ यू कैन वर्क विद दैट टेक्नोलॉजी. तो इस दफा राइट नाउ व्हाट वील डिस्कस इज मोबाइल इकोनॉमी, एंड देन प्लीज जस्ट let me know the timings as well, so I just don't want to overrun the timing. And then I'll talk about evolution of mobile communication and its generations, and then I'll give you a brief introduction about 3GPP, and then what are the requirements driving the 5G deployment, and then what are the 5G use cases. Why we are talking about 5G? Why we need 5G? Do we really need 5G or not? So now going to the mobile economy. So the mobile economy, what do we mean by mobile economy? So we have spoken about security, we have spoken about digital twins, we have spoken about AI and ML. So how this is happening? This is all happening because of the connectivity we are having. This is happening because of the communications which we are having between machines
between humans and interaction between humans and machine. So 10 years back, this was a wired communication. Now everything is wireless. So we are basically expecting a boom of new applications, new developments that are coming in. So our social interaction has changed. You can feel it. Like 15 years back, you used to move around. You go to one place to another, even within your city. Now, after COVID or within COVID, things have evolved. We have change our way to interact within ourselves as a community, with businesses, with governments, even with basically, with with our neighbors. So ये कैसे हुआ है? ये सब कुछ इस तरह हुआ है कि हमारी एक इकोनॉमी पैरेलल खड़ी हुई है, जिसको हम मोबाइल इकोनॉमी कहते हैं. So based upon GSMA, the mobile economy has basically increased from 5.4 billion 2022 will increase to 6.3 billion. This will be basically the unique mobile subscriber increase. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ये स्क्रीन यू कैन लुक एट इट लेटर ऑन एज वेल. जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हैं कि एक तो ये 4G की बेसिकली आपकी पेनेट्रेशन जो है वो 2030 में एक्सपेक्टेड है 36% हो जाएगी, एंड 5G की जो पेनेट्रेशन है वो 12% से 54% हो जाएगी. तो ये दो बहुत अहम चीजें हैं टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरी जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि अभी एज ऑफ नाउ 16 million jobs are basically there which are directly related to mobile ecosystem. मतलब 16 million jobs वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं. तो बेसिकली मेरा मकसद इस स्लाइड को रखने का ये था कि जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू शेयर कि 16 million jobs as of now there are vacancies or there are basically positions where people are being employed, and 12 million jobs are indirectly बेसिकली बीइंग एम्प्लॉयड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज से जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. वो जो ऑपरेटर की साइड पे हैं, वेंडर की साइड पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे हैं. तो ये बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर पार्टिसिपेशन. और इसके अलावा जो जो दूसरी चीज देखने की है कि जो ऑपरेटर के रेवेन्यूज हैं वो बेसिकली दे विल गो फ्रॉम 1.07 ट्रिलियन टू 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2030. तो ये टोटल रेवेन्यूज हैं. इसी तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है मोबाइल इंडस्ट्री का टू द जीडीपी, दिस इज द वर्ल्ड जीडीपी, इट्स एज ऑफ नाउ राइट नाउ 5.2 ट्रिलियन एंड इट वुड गो रेज अप टू 6 ट्रिलियन डॉलर्स. तो दिस इज the prime mover why you should get into the telecommunication industry. And then somebody was asking this question ke, as an electrical engineer, what should we do? So the answer is that explore new technologies, new areas. जैसे कि इल्म किसी की मिरास नहीं है, इसी तरह टेक्नोलॉजी भी किसी की मिरास नहीं है. तो whoever works hard, whoever basically innovate, they will, or as an individual, as a group, or as a country, or as a nation, will come forward. तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मौजूद. चाइना इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. दे वर बेसिकली 1948 में आज़ाद हुए. दे वर बेसिकली हिपी, और क्या कह सकते हैं, वो ड्रग एडिक्ट थी पूरा नेशन, एंड डाउन विद इन 50 years they all got overturned and they became the one of the biggest economy. So it is possible. We are looking at it in the living world, the world which we are living in right now. So this is the prime objective why we should be looking into the 5G. आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर बेसिकली मैं अब आपको बताने की कोशिश करूंगा जल्दी कि मोबाइल कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी इन दिस इंडस्ट्री माइट बी नोइंग इट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ introduction, I will be speaking about it a little bit. तो जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें, मैं जल्दी आपको बताता जाता हूँ. तो 1G के अंदर एनालॉग वॉइस थी, 2G के अंदर डिजिटल वॉइस हुई, 3G में जो है वो हाई स्पीड वायरलेस कनेक्शन के ऊपर बात हुई, 4G जो है वो फास्टर देन 3G आया,
वीडियो क्वालिटी बेहतर हुई, गेमिंग के अंदर काम हुआ, स्ट्रीमिंग और ज़्यादा स्मूथ हुई. Zaim, and then Zaim can look into it. Just unmute the chart. Yes, that's fine. So basically, what happened was in the mobile communication industry is that there was a transition from analog to digital. Number one. Number two, the ask or the need of data rate. That was basically the second big thing. And third thing was there is a transition from circuit switch to packet switch. तो बेसिकली दीज आर द माइलस्टोन्स. तो आप लोग जो अभी स्टूडेंट्स हैं, दीज आर बेसिकली 4G, हम उसको 4G जनरेशन कहेंगे विद अ मिक्स ऑफ 3G. हम लोग जो है वो 1G और 2G की जनरेशन है जिन्होंने बड़े बड़े मोबाइल फोन भी देखे हैं. एनीवे, दिस इज समथिंग विच इज समथिंग मोर लाइक अ हिस्टोरिकल थिंग. और जितने भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं उसमें ये रिवायत है कि हम ये बताते हैं. इसके अलावा इसकी कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है. वी कैन मूव ऑन. तो अभी एवोल्यूशन पे बात करते हैं कि एवोल्यूशन व्हाट हैपेंड इन द एवोल्यूशन. सो द एवोल्यूशन हैपेंड फ्रॉम 2G टू 5G. तो बेसिकली जीएसएम से स्टार्ट हुआ, बेसिकली उससे भी पहले से स्टार्ट हुआ, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जीएसएम से स्टार्ट हुआ और फिर हम अब 5G के ऊपर मौजूद हैं. तो जीएसएम के अंदर बेसिकली हमने सर्किट स्विच था, टीडीएमए टेक्नोलॉजी थी, फिर यूएफटीएस आया, वो सर्किट स्विच और पैकेट स्विच दोनों था, कॉम्बिनेशन था, जिसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सीडीएमए थी. फिर एलटी आया जो कि टोटली पैकेट स्विच है और उसकी जो बेसिकली अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो आपकी ओएफडीएमए है. और अब 5G की बेसिकली वी आर स्टैंडिंग ऑन द 5G, क्या कह सकते हैं, 5G को देख रहे हैं, राइजिंग सन ऑफ 5G, जो कि पैकेट स्विच है और जो कि स्केलेबल ओएफडीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है. तो ये बेसिकली अब ब्रीफ है, उसका डिस्क्रिप्शन है टेक्नोलॉजी वाइज. इसके बाद अब मैं बेसिकली थोड़ी सी बात करूंगा कि 5G की स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, व्हाट इज 5G एंड हाउ 5G केम इनटू बीइंग. So 5G is basically a standard which was developed by third generation partnership project that is called 3GPP, that basically unites 7 telecommunication standard development organizations, जिसके अंदर एरेब है, एटिस है, CCSA है, ITSI है, TSDSI है, TTA है, TTC है. These are basically organizational partners providing their members with a stable environment to produce the reports and specification that is defined 3GPP technologies. So basically हम basically करते क्या हैं कि we have gone through this basically communication dilemma that एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, IBM अपना एक basically protocol develop करती है and their machine speaks to their machine only. When you go to talk to other machines, the problem is that they are speaking French, you are speaking English, or they are speaking Urdu, you are speaking Arabic. तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज जो हैं इस वजह से प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के इनकी वजह से आप एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं that can provide interaction between the multiple vendors and developers and organizations. तो हम जब टेक्नोलॉजी टर्म में बात करते हैं तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत इस वजह से पड़ती है, और 3GPP इज लाइक अ स्टैंडर्ड बॉडी दैट प्रोवाइड्स दो स्टैंडर्डाइजेशन. तो आपको जो भी डिवाइसेस नजर आती हैं, आपको जो भी मोबाइल फोन नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल का आईफोन है, या आपके पास नोकिया का फोन है, या फिर आपके पास सैमसंग का फोन है, तो आप यू जस्ट पुट अ सिम एंड देन यू कनेक्ट टू द नेटवर्क. सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इंटरऑपरेबिलिटी एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन. सो एवरीबडी हैज टू फॉलो दीज स्पेसिफिकेशन. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हैं एंड यू कैन लुक इनटू इट थ्रू इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया like where 5G started. So 5G basically started with the release 15 of 3GPP. Before release 15 it was all 4G, and then now we will be moving to release 16 and release 17. Release 17 March में basically publish होगा, and then release 18 के ऊपर बात चल रही है, and then we will move on to release 20 plus, and that would be basically 6G. So this roadmap is already settled. So like sometimes you feel people feel के हम लोग टेक्नोलॉजिकली पीछे हैं, हमने कोई काम नहीं किया हुआ, तो इट्स नेवर टू लेट.
you can delve into it. You can start reading the specification. You can start working with organizations. You can start working with research and development at any point of time. You can see this is all settled, this is all documented, this is all public information. ये मैं कहीं खुद से नहीं लेकर आ रहा, ये 3GPP की वेबसाइट पे मौजूद है. तो ये रिलीज 15 बेसिकली क्या था? रिलीज 15 5G की EMBB फोकस के साथ था, जिसने 5G की NR की फाउंडेशन रखी है, जिसमें स्मार्टफोन्स, फिक्स वायरलेस एक्सेस, पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्सपेंडिंग टू वेन्यूज एंड एंटरप्राइजेस, ये सारी चीजें हमने कवर की थी. रिलीज 16 के अंदर इंडस्ट्री की एक्सपेंशन आई है, जिसके अंदर बेसिकली URLCC, TSN एंड IIoT, इन बैंड EMTC एंड BIoT, ये सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई हैं. NR जो है न्यू रेडियो अनलाइसेंस बैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. पोजीशन के ऊपर थोड़ी सी बात हुई है कि जी पोजीशन, आपको वायरलेस पोजीशनिंग जो है आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए. फिर उसके बाद 5G V2X बेसिकली व्हीकल टू नेटवर्क साइड लिंक मल्टीकास्टिंग, ये इंट्रोड्यूस की गई है. रिलीज 17 के अंदर बेसिकली हम अगेन आगे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली नए वर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है, जिसमें अनलाइसेंस एंड लाइसेंस स्पेक्ट्रम ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज है, इम्प्रूव्ड IIoT है, पोजिशनिंग है, IAB इंटर IAB से कुछ होता है वो, बहरहाल आप आगे देख लीजिएगा, मुझे इतना याद नहीं है इस वक्त. तो ये बेसिकली हमारे पास रोड मैप मौजूद है. एंड देन इन रिलीज 18 वी विल बी वर्किंग ऑन 5G एडवांस. 5G एडवांस से क्या होगा कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ बेसिकली यूज केसेस है उनको एड्रेस करेंगे. उसके अंदर हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन भी इसके अंदर है, कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन कम इनटू प्ले. मिशन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात होगी, रिमोट ऑपरेशंस के ऊपर बात होगी. तो ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन विल प्रोवाइड यू, बेसिकली यू पीपल विल प्रोवाइड देयर नीड्स, एंड स्टैंडर्डाइजेशन विल बेसिकली टेल अस हाउ टू गेट दोज इम्प्लीमेंटेड. एंड बेसिकली मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो ये मेरी ख्वाहिश है. and how can I do that is basically how level of comfort we should have, like it should be a video, और वो वॉइस की क्वालिटी क्या होगी. तो ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन बताएगी कि भाई आपको अगर लोगों से बात करनी है तो आप वीडियो की आपकी कैसी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का काम है, और ये स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज करती हैं, जिसमें 3GPP इज द मेन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी. अब आते हैं कि जी 3GPP के स्टैंडर्ड्स बनते किस तरीके से हैं. तो 3GPP जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. सिस्टम इंजीनियरिंग एफर्ट्स, टेक्निकल वर्क अकर्स अक्रॉस 3 टेक्निकल TSGs एंड 16 स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप्स. तो ये जो बेसिकली इसके 3 TSGs हैं, जिसको हम रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहते हैं, एक RAN है, एक सिस्टम एस्पेक्ट है जिसको ऐसे कहते हैं, और एक को नेटवर्क एंड टर्मिनल्स है जिसको हम CT कहते हैं. तो ये बेसिकली इसके अंडर जो है वो 16 स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप्स हैं, जिसमें RAN वर्किंग ग्रुप 1 है, वर्किंग ग्रुप 2 है, वर्किंग ग्रुप 3 है, वर्किंग ग्रुप 4 है, वर्किंग ग्रुप 5 एंड 6. हर एक का अपना काम है, और ये हर एक वर्किंग ग्रुप अपनी अपनी डोमेन में काम करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, और उसके बाद स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हैं. तो इट्स प्रीटी मच स्टैंडर्डाइज. यू कैन गो ऑन 3GPP वेबसाइट एंड स्टार्ट लुकिंग एट इट. The best source of information is actually 3GPP itself, the website itself. But I can sell you as many books, as many websites where you can get the same information, but you end up basically everybody would end up into referring to 3GPP when they are talking about 5G, because उसके बगैर काम पूरा नहीं हो सकता. Because 3GPP is the one who started 5G, और वही स्पेसिफिकेशन है 5G की. तो इसके अलावा और कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं. तो मकसद ये आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू 3GPP के देने का यूं था, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, यू शुड गो टू 3GPP वेबसाइट एंड स्टार्ट लुकिंग एट इट राइट नाउ. ये 3GPP के रिलीजेस हैं, जो कि मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था कि ये किस तरह वर्क करता है. तो ये अगर कुछ लोग जो पुराने हैं वो दे कैन रिमेंबर दैट देयर इज अ UMTS दैट वाज स्टैंडर्डाइज्ड समवेयर 1999.
Then we had basically release 8, which is LTE, that was ended up in 2009. And then release 15 is basically somewhere 2019 में standardized हुआ था. So right now we are sitting in 2023, and this is release 15 is the point where the 5G was standardized. So we are already like how much? 4 years have passed, and we are still in the phase of adapting 5G. So this is the cycle of research and development that right now basically release 18 is getting standardized, which will come up in like later 3 to 4 years. तो ये basically आपको time window को समझना होगा, and you have to adapt with it. तो ये UMTS के release 99, release 0, release 4 ये सारे UMTS के flavor थे, and then release 8 onwards was LTE, and then release 15 onwards is 5G. मैंने इसमें mention नहीं किया है, but you can look at it any other documentation on public. This is all public information. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो 5G का standard है क्या? तो 5G basically is मतलब the first question comes in के हमारे पास wireless connectivity तो मौजूद है, तो why we need 5G? So the need of 5G is basically something which the standards put in place and the expectation. So ये basically it came up with 3 basic things. Actually, the 4th one I have added it because this fixed wireless access was not focused at that time, was not exactly a use case at that time, but later on it became very important. So इसमें enhanced mobile broadband है, EMBB, and then it's massive machine to machine communication है, इसमें ultra reliable low latency communication. तो जो बातें अभी तक हुई थी, जो सिक्योरिटी की बात हुई, जो डिजिटल ट्विंस की बात हुई, जो AI की बात हुई, जो IoT की बात हुई, वो सारा का सारा 5G is trying to encompass whatever needs which are developed or getting, or with the ask is coming from the industry or the communities or the individuals. Like, you know, people are going on gaming, online gaming, people are going on online streaming, people are doing online lectures, web universities are being created. So these are all needs which are getting developed with time, and that has to be addressed by certain communication infrastructure. And for that, basically, we are seeing 5G getting developed and providing those facilities. And that's what the requirements are being set. That when we are saying enhanced mobile broadband communication, that means that we will be providing 10 to 20 Gbps peak data rates. Then we will be providing 100 Mbps whenever needed. So it would be like ubiquitous. 10,000 times more traffic as compared to LTE. Macro and small cells will be provided. Support of high mobility, like we will be going on basically high-speed trains, and we will be getting our connectivity done. Network energy saving by 100 times. So right now our networks which are being built, telecommunication networks that are being built are not very network efficient. So we need the network efficiency. We need the greener network that would be low power, more efficient, less energy consumption. So these are basically what are the requirements being set, and these are basically all called as enhanced mobile broadband use case. And then we have massive machine-to-machine communication, where we are having high density of devices. So just imagine right now, I showed it to you, we had almost 7 billion population, human population, and you can go back and let me show you. हमारे पास कितनी सिम्स हो गई हैं? एक मिनट, जल्दी जल्दी पीछे से दिखाता हूँ आपको. हमारे पास, सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी मोबाइल इंटरनेट यूजर जो है 5.5 बिलियन है. सिम जो है हमारे पास 9.8 बिलियन हमारा टारगेट है. 8.4 बिलियन हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड. So this is the basically penetration. And then there is another thing which is basically, you can look at it here, license and IoT connections. These are going from 2.5, already 2.5 billion IoT connections are there in licensed cellular IoT. Unlicensed अलग है, और जो कि हम expect कर रहे हैं 5.3 billion connections पे जाएंगे. So basically these are devices. These are like your phone, not only your phones, your fridges, your TVs, your air conditioner, your vacuum cleaners, your basically like household things which are getting connected to the network. And I'm talking about the home connections. If you go into the industry, there are multiple other sensors that are being connected. When you are going into basically industrial 4
revolution which we are talking about right now, that is basically where you will be having all the automation done. So the machine will take over. That's what we are, the buzzword is the machine will take over. That's basically what we are looking for. That's what we are facilitating for. That the automation to a certain level, that the industrial floor will be getting automated to that level, that the human interaction will be minimal. So that's what we are striving for, and that's what 5G is basically looking ahead. So ये basically हमारा काम है as an engineer, as an electrical engineer, we have to basically work into those technologies that will be enabling those use cases. अब ये basically कहने को तो बहुत अच्छा buzzword है, लेकिन ये होगा कैसे, उसमें reliability कैसे आएगी, उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होगी, उसमें आप बेसिकली जो कमिटेड डेटा रेट है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे. दिस इज ऑल व्हाट द इंजीनियरिंग इज अबाउट. So, and that's what the standardization body will be helping us for. So standardization body will provide you basically the expectation, and then you will provide, as an engineer, as a researcher, you will be providing the enablers or facilitators based upon technology, how this will happen. तो बेसिकली स्टैंडर्ड आपको बोलेगा भाई अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तो आप कैसे होंगे अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव? अल्ट्रा रिलायबल होना चाहिए अल्ट्रा यूआरएल एलएलसीसी के अंदर, तो आप कैसे वो करेंगे? तो जिसके लिए आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी को तलाश करना होगा. यू वुड कम अप विद सॉल्यूशंस दैट हाउ यू कैन बी अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव. हाई स्पीड मोबिलिटी आप किस तरह करेंगे, मोबिलिटी किस तरह होगी, और कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट. फिक्स वायरलेस एक्सेस को मैंने इस वजह से यहाँ पे रखा है क्योंकि बेसिकली फिक्स वायरलेस एक्सेस वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी द बज़वर्ड. एक्चुअली पीपल वर एक्सपेक्टिंग टू गो फॉर एन एक्सटेंडेड रियलिटी XR VR to be the next big thing in 5G, but unfortunately because of the fall of Meta, that is not happening. Instead of basically we are seeing a very great boom in fixed wireless access. That is basically your last mile is being used to be fiber to the home was the concept in basically most of the urban environment, जिसको आप हटा के बेसिकली अगर आपको याद हो जो पाकिस्तान में लोग हैं वो वाईमैक्स होता था, उस वाईमैक्स को रिप्लेस कर रहा है 5G. क्योंकि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के अंदर you can basically work with the high transmit power from the customer premises equipment, and then you can have basically indoor outdoor hotspots that can be connected to a wireless connectivity to a 5G network. So that's basically something which is unexpectedly came out, although there was there was some expectation, but not to that extent. फिर उसके बाद जो है वो उसी चीज का आगे थोड़ा सा और जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि ये ट्राइंगल आपको जरूर नजर आएगा जब भी आप 5G के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे. तो ये ट्राइंगल बेसिकली 3 चीजें हैं कि एक्सटेंडेड मोबाइल ब्रॉडबैंड, मैसिव मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, क्रिटिकल मशीन कम्युनिकेशन. इन 3 के गिर्द बेसिकली आपकी सारी रिक्वायरमेंट घूम रही है. और बेसिकली ये एक बड़ी अच्छी जो है वो डिपिक्शन है कि हाउ you are doing it. So you start with basically a 10-year battery life. These are all expectations which is being set by 3GPP for the 5G use cases. I won't spend much of my time here. I will move forward. ये मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताना चाह रहा हूँ कि what is the difference comparing from 4G to 5G. 4G के अंदर 10 मिलीसेकेंड की लेटेंसी थी. 5G में we are expecting to have less than 1 millisecond latency. सही है. exabytes per month data traffic, 7.2 exabytes per month था traffic estimation. यहाँ पे 50 exabyte per month है as of 2021. It might have gone up to 75 exabytes. This is the traffic demand. peak data rates थे 1 Gbps. peak data rates 5G के अंदर जो expectation है वो 20 gigabits per second है. available spectrum 4G के अंदर 3 gigahertz का था. available spectrum 5G के अंदर 30 gigahertz का है. ये एक और चीज है बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्पेक्ट्रम पार्ट. वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट इट. सो लेट मी गो फास्टर. सो टेक्नोलॉजी इनेबलर्स क्या क्या है 5G के अंदर. जो बेसिकली रिलीज 15 के अंदर टेक्नोलॉजी इनेबलर्स थे और जो कि बेसिकली 2018 के अंदर रिलीज हुआ था, फिक्स हुआ था. उसके अंदर ये था कि फ्लेक्सिबल स्लॉट बेस्ड फ्रेमवर्क होगा. बेसिकली वो किस तरह इंप्लीमेंट हुआ, न्यू न्यूमरोलॉजी और ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल ड्यूरेशन से, और एड्रेस जो बेसिकली ये किस चीज को एड्रेस कर रहा है कि मल्टी बैंड डिप्लॉयमेंट को, इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड जो इसका यूज केस था, और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी. तो बेसिकली मैं आपको इस स्लाइड में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे यूज केसेस थे, जो कि 3 मेजर यूज केसेस थे जो कि आपने यहाँ पे देखे 4 बेसिकली,
उसको कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है। तो वो बेसिकली इन वेरी फ्यूअर टर्म्स जो हम बेसिकली कर रहे हैं वो ये कि हमने फ्लेक्सिबल स्लॉट बेस्ड फ्रेमवर्क किया है, बिकॉज इट इज स्लॉट बेस्ड, एवरीथिंग इज पैकेट। स्केलेबल और एफडीएम बेस्ड एयर इंटरफेस क्रिएट किया है 5G के अंदर। ये बेसिकली अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी के लिए हमने करेगा। सेल्फ कंस्ट्रेंट स्लॉट स्ट्रक्चर है, जिससे बेसिकली आपके इंटर सिंपल इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया गया है। इसके अंदर हमने एडवांस चैनल कोडिंग को यूज किया है 5G के अंदर, ताकि हम जो है वो इनहेंस हायर डेटा रेट जो है वो हम बेसिकली पैकेट्स को मूव कर सकें वायरलेस चैनल के ऊपर, जो कि हम अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी के अंदर भी काम आएगा, फिक्स वायरलेस के अंदर भी काम आएगा, और इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड में भी काम आएगा। इसके बाद हमने मैसिव माइमो की टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जिसने बेसिकली हमारी सिग्नल इंटेग्रिटी को इम्प्रूव किया है। हमारे पास रिलायबिलिटी बढ़ी है, और हम बेसिकली मल्टी यूजर माइमो इनेबल कर सकते हैं। ये बेसिकली अगेन इंक्रीज इन डेटा रेट, फिक्स वायरलेस एक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया है। इसके बाद जो नई चीज रिलीज 15 में इंट्रोड्यूस की गई थी वो बेसिकली मिलीमीटर वेव का पोर्शन था, जो कि बेसिकली हाई बैंडविड्थ एरिया है विद इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जिसको यूटिलाइज करते हुए हमने अगेन हमें हमारी नीड जो डिमांड थी, मार्केट की डिमांड थी, वो हायर डेटा रेट था। तो उस हायर डेटा रेट को डिप्लॉय करने के लिए हमने ये सारी चीजें मॉडिफाई की हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड, एंड वी मूव फ्रॉम 4G टू 5G। अब मैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी मैं करता चला जाऊंगा, वरना इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन है, और ये इस पीपीटी में मौजूद है, एंड वी कैन पब्लिश इट एंड यू गाइस कैन लुक एट इट लेटर ऑन एज वेल। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 5G के अंदर ये थी कि 4G के अंदर ये हमारा स्लॉट बेस्ड आर्किटेक्चर था, लेकिन it was flat. So either you transmit or you don't transmit. These basically boxes will be transmitted orthogonal frequency division multiple axis के ऊपर as it is. 5G के अंदर basically उन्होंने flexibility दी है. You can basically do multicasting. You can do blank. You can have blank slots. We can have mission critical transmission. You can have dynamic uplink and downlink. You can have DSS. You can have scalable TTI. So this is the flexibility which has been provided by 5G. So this basically slide provides that information. How this will happen, you have to look into the orthogonal frequency division multiple axis, how those orthogonality is achieved. That is basically something underlying phenomena which you can study by yourself. I'm just talking about what is 5G is providing you right now. इसी तरीके से बेसिकली न्यू न्यूमरोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, व्हाट डज दैट मीन? तो मैं थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करूंगा। न्यूमरोलॉजी का मतलब यह है कि आपने सब्सक्राइबर की जो सब कैरियर स्पेसिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन को डिफाइन करना है। वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। This is basically technology that is being used in place of CDMA, where you basically do orthogonal, you transmit simultaneously on a band which have orthogonal symbols. तो एक इंस्टेंट के ऊपर आपकी एक फ्रीक्वेंसी का बेसिकली क्रेस्ट होता है, और द रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज अंडर द ट्रफ। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, whereas in टाइम डोमेन उसको आप बेसिकली उसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो बेसिकली हम इसको मल्टीपल सब कैरियर स्पेसिंग के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट मल्टीपल सब कैरियर स्पेसिंग इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। Why we call it flexible numerology? Because in LTE we didn't had that facility. In LTE, what we used to do was we used to use only 15 kilohertz of carrier spacing, and that was being used prevalently, and we didn't had any other option. In 5G, we have this option that we have the flexibility. We can move from 15 kilohertz to 30 kilohertz to 60 kilohertz, and then in release 17 they have gone up till basically to 480 and 960 kilohertz, depending upon which band you are using. So basically, the higher sub-carrier spacing you go is for higher frequency bands, because you can afford very close symbols on orthogonal symbols on higher band, because you have bigger bandwidth, so you can transmit more data through it. तो इसको अभी समझने का सिंपल सा तरीका यह है कि आपके पास एक समझ लें कि ग्रिड है जो कि आपने क्रिएट किया है टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर,
और उसकी आप सब कैरियर स्पेसिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट बेसिकली टाइम डोमेन में आएगा कि आपके स्लॉट्स जो हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर आप मल्टीपल स्लॉट्स को भेज सकते हैं। ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा इसका मकसद क्या है। तो ये मिनी स्लॉट्स क्रिएशन है। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि जो 5G NR का जो फ्रेम है वो 10 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन पे कंसिस्ट करता है। A frame consists of 10 subframes with each having 1 millisecond duration. This is standard like LTE. Each subframe consists of 2 microslots. Each slots can be either 14 normal or 12 extended cyclic prefix OFDM symbols. तो ये आगे आएगा, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आप समझ लीजिए, लेकिन मैं इसको विजुअल एग्जांपल भी मैंने इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। तो स्लॉट इज अ टिपिकल यूनिट फॉर ट्रांसमिशन यूज्ड बाय शेड्यूलिंग मैकेनिज्म। तो आप बेसिकली जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं वायरलेस के ऊपर, when you are talking about OFDMA, you are doing in a slot. Basically, you are doing in a time slot or on a certain frequency. जिसको आप सब कैरियर स्पेसिंग से टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप देखें तो उस तरह होगा। NR allows transmission to start at any OFDM symbol and to last only as many symbols as required for communication. ये NR की फैसिलिटी है, 4G के अंदर ऐसा नहीं था। 4G में there was fixed transmission times that were available and you had to transmit on those OFDM symbol. If you are not transmitting on those OFDM symbol, those were fixed. लेकिन 5G में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि you can start from any of the OFDM symbol and you can end on any of the OFDM symbol. This is known as mini slot transmission. This facilitates very low latency for critical data communication as well as minimizes the interference to other RF links. Mini slot helps to achieve lower latency in 5G NR architecture. बेसिकली ये एक फीचर है न्यूमरोलॉजी के बाद कि आपकी मिनी स्लॉट की वजह से आपको कैपेबिलिटी हुई है, यू कैन ट्रांसमिट मोर डेटा इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम विद लो लेटेंसी। अब ये होगा किस तरीके से, इसकी ये बेसिकली डिपिक्शन है, इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि आगे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम हमारे पास कम है। तो बेसिकली ये वायरलेस का फ्रेम है जो कि 10 मिली सेकेंड का है, यू कैन सी इट हियर, एंड बेस्ड अपॉन दैट फ्रेम यू हैव बेसिकली सब फ्रेम्स ऑफ 1 मिली सेकेंड। और एक सब फ्रेम के अंदर बेसिकली जो स्टैंडर्ड आपका सब फ्रेम होता है उसके अंदर 14 और OFDM सिंबल्स होते हैं। तो 0 to 14 13 आपके OFDM सिंबल हैं, जिसमें से आपका पहला जो है वो साइक्लिक प्रीफिक्स है और रेस्ट ऑफ देम आपका पेलोड है। अब ये अगर 15 किलो हर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग होगी तो ये आपके स्टैंडर्ड है, जो कि LTE के अंदर भी ऐसी है। लेकिन जैसे ही आप इसको 30 किलो हर्ट्ज पे करेंगे तो बेसिकली you are squeezing the data the same amount of number of slots into less amount of time. So that's what is happening when you are talking about the numerology. When you are going from 15 to 30 kilohertz, basically you are squeezing more information in the same amount of time. तो अभी आपका सिंबल तो वही है 1 मिली सेकेंड का है, बट आपने उसके अंदर 2 टाइम स्लॉट क्रिएट कर दिए with 30 kilohertz, and then when you move to 60 kilohertz आपने उसी टाइम के अंदर 4 सिंबल्स क्रिएट कर दिए, एंड देन यू मूव टू 120 किलोहर्ट्ज, आपने उसमें 6 या 8 सिंबल्स क्रिएट हो गए, 8 बेसिकली टाइम स्लॉट्स क्रिएट हो गए, एंड देन एंड सो ऑन. So this is the numerology, what it means, that when you are squeezing something in frequency, increasing in sub-carrier spacing in frequency, your time will get squeezed, and that the impact is that you will get more data rate, more throughput out of the same transmission. So this is basically the concept of flexibility or numerology. तो इसकी बेसिकली एक बहुत ही मैंने सिंपलिस्टिक सी ये डायग्राम क्रिएट की थी जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम न्यूमरोलॉजी 0 to 4 पे जाते हैं तो हमारा बेसिकली सब कैरियर स्पेसिंग 15 to 240 किलोहर्ट्ज पे जाती है, ठीक है, लेकिन हमारा सिंबल ड्यूरेशन जो है वो कम से कम होता चला जाता है, और फिर उसके बाद हमारा फ्रेम साइज वही रहता है, लेकिन सब फ्रेम जो है वो हमारी स्लॉट्स जो हैं वो 1 मिली सेकेंड के अंदर 1 से 2 फिर 4 और फिर 8 स्लॉट्स होती चली जाती हैं, एंड देन दे गो अप टिल 16. The point here is that the higher sub-carrier spacing you use, the more data you can pack in and send it through a wireless channel. I hope it clarifies a little bit, but अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो इसको आप ये समझ लें कि the takeaway would be is that numerology is the flexibility of
using different sub-carrier spacing or putting data on a wireless channel. फिर उसके बाद हमने शुरू में बात की थी कि चैनल कोडिंग की नई स्कीम्स आई हैं, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगा कि इसके अंदर चैनल कोडिंग हमने चेंज किया 5G के अंदर. वी आर टेकिंग अ टोटली डिफरेंट पाथ फ्रॉम LTE. वी आर यूजिंग लो डेंसिटी LDPC codes and we are replacing them with the turbo coding that was used in the PDCH coding, जिसकी वजह से हमें हाई एफिशिएंसी मिल रही है, लो कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है, लो लेटेंसी मिल रही है. तो आप ये देख सकते हैं कि डाउनलोड शेयर चैनल और अपलिंक शेयर चैनल के ऊपर LDPC के कोड यूज हो रहे हैं, और वेर एज द कंट्रोल चैनल के ऊपर पोलर कोडिंग यूज हो रही है, जो कि पहले जो थी वो TBCC कोडिंग यूज होती थी, और अब जो है वो आप पोलर कोडिंग यूज हो. तो दिस से बेसिकली इम्पैक्ट हमें अगेन वी आर एबल टू सेंड मोर डेटा ऑन अ वायरलेस चैनल, मोर रिलायबिलिटी, मोर हायर एफिशिएंसी, लो कॉम्प्लेक्सिटी एंड लो लेटेंसी. इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इट्स मोर सॉर्ट ऑफ रिसर्च टॉपिक. दीज आर ऑल सेट डन थिंग्स. मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा कि हमने बात की थी मैसिव माइमो के ऊपर. तो मैसिव माइमो के ऊपर मैंने इस पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज्यादा किया हुआ है कि व्हाट वेयर मैसिव माइमो कम्स फ्रॉम. तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर आता है. इसकी डिटेल बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है. इसका लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैसिव माइमो जो है is basically the capability of transmitting simultaneously from a single antenna to multiple users. इसका बेनिफिट क्या है? इसके अंदर हमारे बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. और इसका बैकग्राउंड क्या है कि बेसिकली डाइवर्सिटी को हम यूज करते हैं, कि डाइवर्सिटी टेक्निक्स हैं. इसकी अप्रोच क्या है ये आप लोग पढ़ सकते हैं, स्लाइड नंबर 3 और 4 के अंदर मौजूद है. आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर हिस्ट्री मौजूद है. बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैसिव मैमो के बेनिफिट्स क्या हैं. इसके अंदर बेसिकली आप मैसिव मैमो से आप बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं. ये आइडिया नया नहीं है, इट वाज बेसिकली फ्लोटेड समवेयर इन 2000. दैट वाज द माइमो इंट्रोडक्शन. नाउ इट इज बेसिकली बीइंग एक्सप्लॉइटेड एक्सटेंसिवली इन 5G. इसके ऊपर बेसिकली 5G का मिलीमीटर वेव का एरिया तो 5G का माइमो पे, मैसिव माइमो पे ही खड़ा हुआ है. तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, लेकिन मैं आपको इसके बेनिफिट्स के ऊपर बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं. बेनिफिट्स इसमें क्या है जी, आप बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं. यू कैन बेसिकली ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल्स और बेसिकली मल्टीपल बीम्स ऑफ अ सिंगल यूजर. दिस बेसिकली इंप्रूव्स द सिग्नल क्वालिटी, रिलायबिलिटी, SINR, व्हिच इंक्रीज द थ्रूपुट. आप बीम नलिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर बेसिकली ट्रांसमिटिंग, बेस स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग टू वन यूजर एंड यू डोंट वांट दैट base station to transmit to the other user, you can basically suppress the side beam that are being sent towards the other mobile user. तो ये बेसिकली बीम नलिंग के लिए भी काम आ सकता है. इसके अंदर बेसिकली देयर इज एन ऑप्शन ऑफ हैविंग सिंगल यूजर माइमो एज वेल एज मल्टी यूजर माइमो. सो एक बीम को आप एक यूजर पे भी फोकस कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली ट्रांसमिट दोस बीम्स टू मल्टीपल यूजर्स. दिस इज कॉल्ड मल्टी यूजर माइमो. Again, these are applications which are done on based upon what are the complexity of the system. And I'll move forward. Sorry Zaim, I know it's 10 o'clock. I'm sorry. अब इसके अंदर थोड़ा सा माइमो मोड है कि इसमें रेसिप्रोकेसिटी बेस्ड माइमो होता है और PMI बेस्ड अप्रोच है. ये भी डिटेल मैंने इसके अंदर दी हुई है. I'll share the PPT and you can we can move along with it later on. ये चीज थोड़ी सी जरा Zaim, just give me like 5 minutes for this. This is the last topic. स्पेक्ट्रम क्या है 5G का? 5G का स्पेक्ट्रम बेसिकली अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो हम कर रहे थे मिड बैंड और लो बैंड के ऊपर, LTE के अंदर. हाई बैंड बेसिकली इज बेसिकली what millimeter wave is. So this is the discussion of 5G, or this just basically gave us a lot of options in terms of high bandwidth, and then when we got high bandwidth we could basically send more data on the wireless channel. तो बेसिकली 5G के अंदर दो बेसिकली वो हैं, एक FR1 है और FR2. FR1 जो है वो बेसिकली फ्रॉम 450 मेगाहर्ट्ज टू 6000 मेगाहर्ट्ज है. बैंड आर नंबर फ्रॉम 1 to 255, commonly referred to as sub 6 gigahertz. FR2 जो है वो 245 2450. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि FR1 और FR2 आर टू फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग बैंड इन 5G. और इसकी भी FR2 के अंदर भी थोड़ा सा मिड बैंड और लो बैंड आ गया है. FR221 और FR222 ये रिलीज 17 के अंदर है. लेकिन जस्ट टू स्टार्ट ऑफ दैट 5G वर्क्स फॉर टू basically frequency ranges. One is FR1 and one is FR2. When we talk about FR2 is the millimeter wave part.
एंड बेसिकली द डुप्लेक्स मोड एंड FR2 इज TDD। और उसके अंदर बेसिकली मैं आपको जो बेसिकली जो दिखाने की चीज है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी सब कैरियर स्पेसिंग क्या क्या यूज हो सकती है, और उसके बाद हमारे पास बैंडविड्थ देखें कितनी है। 200 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है। वेयर आप FR1 में देखें आपके पास 20-40 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ बड़ी मुश्किल से मिल रही है आपको, सही है। तो ये बेसिकली दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मिलीमीटर वेव, यू आर गेटिंग मोर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एंड यू आर एबल टू पंप मोर डेटा थ्रू मिलीमीटर वेव। उसके बाद बेसिकली मैं इसके अंदर मिलीमीटर वेव की डिटेल्स भी मैंने शेयर की हुई है, यू गैस कैन लर्न एंड गो थ्रू इट। लेकिन ये कि हायर बैंडविड्थ के ऊपर, हायर बैंड्स के ऊपर यू हैव मोर बैंडविड्थ। द प्रॉब्लम विद द हायर बैंड इज दैट the signal level goes down predominantly and your signal footprint, basically your self footprint decreases। तो जो लोअर बैंड होते हैं उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, जो हायर बैंड होते हैं उनकी पेनिट्रेशन कम होती है। तो वो कुछ थोड़े से चैलेंजेस हैं जो कि 5G ने डील किए हैं, एंड वी कैन ऑलवेज हैव अनदर सेशन ऑन दैट। तो बेसिकली आपको बेसिकली मुझे सिर्फ इस सेशन में ये बताना था कि 5G है क्या, 5G कहाँ से डेवलप हुई, 5G के स्टैंडर्ड्स कहाँ से आए, और 5G के बेसिकली रिलीज 15 के अंदर क्या क्या फीचर्स है। और मैं अब यहाँ पे अपना सेशन एंड करता हूँ, और जो क्वेश्चंस हैं वो हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी।